a co-founder and head of growth at Dev Darshan app. A really interesting name to your app. Thank you. And Sagnika comes with an experience of over 6 years in the hospitality sector and is currently one of the co-founder for Dev Darshan app. Being an economics student, she has always been interested in understanding behavioral trends and always been interested the industry has from the viewpoint of producer and consumer. So I'm really happy that today you are with us, and our topic is very relevant, and it would be really great to know about the northeastern India, and because you've been hailing from there, and and you find a lot of immense interest in understanding the tourism of the country, which is what we want to do. We want more and more people to understand the importance of our country, our travel, our importance of our दोबारा से connect करो, दोबारा से connect ecosystem. So yeah, I'll request Subhashi to mute. One second, I'll mute him. It would be really great to hear, and since you've been involved in making a platform which connects people to temples across India. So with over 100 temples on Dev Darshan today, platform within 6 months of the launch, you believe that there's an impact of digitization, and I really feel that this is very important religious thing. So over to you, Sagnika. It would be great to know your views. Yeah. Hello. Uh, so first of all, let's address the fact that the outbreak of COVID-19 has defined global events in 2020. And this crisis has enforced global travel restrictions. Now, this pandemic has transformed the entire world, creating a new normal for domestic and international travel. And at this point, it's very crucial that we keep India connected to their faith. So recently, due to Dev Darshan, I have been interacting with a lot of temples. And one common thing among the temples we onboarded, be it Shaktipeeth Chamunda Devi Temple, or Shaktipeeth Ma Baglamukhi Temple, or Durgyana Temple, one thing I realized is each of these temples has suffered a setback in their footfall and their revenue. And therefore, it's a critical time that strategies are being developed for the recovery and rebuilding within this new atmosphere of uncertainty. And one way to do that is digitalization of religious content and services. Now, before we get into digitalization, I want to talk about a few data here. According to Indian Brand Equity Foundation, in 2017, travel and tourism contributed to 9.4% of India's GDP, which is around 15 trillion rupees. And they predicted that by 2028, it would rise up to 32 trillion Indian rupees. Like, these are like very huge numbers. Also, interesting facts are 60% of domestic travel caters to religious tourism, that is, they're directly or indirectly linked to pilgrimage and religious tourism. And COVID-19 has changed life patterns around the world, specifically the travel aspects. And in this context, Indian tourism, the domestic religious tourism, plays a vital role in our society. The ancient iconic religious sites, they are booming markets for both international and domestic tourism. Now, talking about how digitalization would help. Digitalization would provide virtual devotional experience to every devotee at home. Whoever cannot reach the temple due to COVID, they can sit at home and experience that. And an integration of a devotional content platform along with religious service, marketplace, and donations would be like a next level thing. Now, Team Dev Darshan, we have facilitated virtual darshan for these temples during lockdown. And
like during COVID, we tried to cover all the festive seasons, Navratri, Diwali, Chhat Puja. The Devdarshan team had worked really hard to go to these temples and talk to the authorities, collect videos from them, and take it out to people. So during pandemic, we made it clear that we want people sitting at home to stay connected to their faith. Now, next, moving forward, what our team plans is to integrate digital donations for temples. People who are staying outside the country, they are still rooted to our culture. And we want to make it easier for them to donate if they want to conduct any religious services, staying anywhere, they can do it. And online puja, online prasad delivery, and introduce tourism packages and yatra to promote religious tourism to the holy sites of India. And currently, Devdarshan is providing an online web portal and a mobile app to 5,000 plus temples. And these temples can outreach to the global audience. So during COVID, we have successfully onboarded temples from Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal, Tripura. So we have gone to all the states and we have onboarded temples. Uh, Lastly, the one thing I'd like to mention is that Digital India is incomplete without digitalization of devotion. And our team is striving hard every day to create more economic opportunities for the people and the small and medium sized business involved in religious tourism domain and fulfill the dream of Atmanirbhar Bharat of our Honorable Prime Minister Narendra Modi. And I strongly believe that our heritage, culture, and religion will project India as a soft power in the world. So, yeah, over to Tripti. So I think thank you so much, Satvika, for sharing your thoughts. I will now request I think I can see Mr. Viral is still here. Can you please unmute yourself and continue your discussion? I think because of some network issue, we could not hear you. So, I'm audible Yes. to you? Yes, Yeah, Mr. Vikal. thank you, Please. Tripti, once again allowing me, and thank you all the participants for being patient to listen. I mean, as told by Vipul, my colleague earlier, we have taken up this issue of safety and tourism because safety and tourist as utmost priority post 2013 when we realized that during this Char Dham Yatra, the Kedarnath tragedy took place. And you won't believe we were surprised to know that there was no data with the government whose life has been lost. So from there, this idea of safety management triggered us, and we felt that any destination is, if it becomes safe, it gives you happiness also. It gives you happiness not only to the traveler, it gives happiness to the state, it gives happiness to the country. So from there, this idea trickled off. And at present, now we are on ground in Uttarakhand for almost now 7 years. We have been continuously evolving up this model of providing safety, of providing information, of providing related other set of information which are necessary for a traveler when he cruise along the routes. So what happens is, let's say if you're traveling to Char Dham, any of the Dham, and you are stuck somewhere, so whom to call? If it is a distress call, probably you're lost again. At some places you will not have even signals. So we have designed a system whereby we will always keep you on track with us, and we will always keep on sending you signals and updated informations related all your issues. So by way of doing this, we always keep you connected, keep you live. And in this phase, our local stakeholders, let's say our local poniwala, our local transporter, local hoteliers, they are our live reporters. There are many a times when you go to these char dhams, you will find the landslide is a common problem. So what we have done is that we have designed a system whereby you will be marked in advance if the route is closed.
So you can take an alternate route, or you can station yourself where you are. I mean, you will not be finally on the roads, and you will not be waiting hours and hours in the queue. We try to keep you safe. So you can take alternate plans. You can go for a next destination, but you may not travel to that particular route. So keeping all these things in mind, we started working on this particular project, and we have been trying to explore opportunities in the hilly regions of India at present. And around August 2019, this was very much put down by the Honorable Minister of Tourism, Shri Patel ji, that he urged all the states and the tourism ministers to take this particular aspect of safety on their primary agenda, because this is something which gives a bad name or a good name to a country and to a state also. So, during that time, we were also given a temple on board is there with us, which is close to Kedarnath. So now that temple at Narayan Koti is being given to us under Adopt a Heritage scheme. So we are now keeping and developing. We are starting this process of developing that temple and putting up correct set of informations to the related traveler who are on the way to that site. So that was done by us, and at the same time, we are also working closely with the local bodies, local citizens, local residents of the villages, various villages which comes on the way to showcase their food, to showcase their culture. We are developing small circuits also. So we are trying to increase their participation, because there are many villages post 2013 at Kedarnath strategy lost their family members. So isolation was there and a lot of gloominess was there in their families. So we are just trying to revive their lives also. We are trying to educate them, and we are also trying to educate our traveler who are visiting Char Dham, that what else they should do in advance, where all they should approach for the set of any emergencies in case it is there. And we are also bridging the gap between the state government, the tourism, and the industry stakeholders. So probably this year, if everything goes well, we hope that this model will be live again to the private players also. As of now, beta testing has been on for last 2 years, and we are getting successful results out of it. Many a times in last 2 years, we have seen that people have, instead of spending their time on the roads, they are spending their time enjoying at a destination or in their hotels itself. So, as of now, this is something to say. Now over to you, Tripti. Hello. 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 Yeah, thank you so much. Thank you so much. And I'll hand over the session to Miss Kirti. Kirti, can you unmute yourself? Hello. Hello. Yeah, am I audible now? Yes, you are audible, Kirti. Okay, well, hello, Tripti ji. How are you? Thank you. Well, thank you so much. And I think now I will take over from here. And thank you so much, Vikal ji, for your session. It was really enlightening to see that you have been working so much and so well in the Char Dham Yatra circuit, and as well as developing the communities over there. So I have a question for you, Vikalji, that since you are working on the local communities as well, so whenever you are working with the communities, what are the challenges you face while working with them? Because their participation is really important in developing the tourism. I think we have to unmute Mr. Yeah. Kirti, can you hear me? Yes, of course, Vikalji. Kirti, this is not being much of a challenge, because when you move upward towards the hills, let's say when we leave the plains of Himalayas,
and we moved to the middle Himalayas and the upper Himalayas. There you will find the people are too simple to work with. They are not complicated. Their lives are very, I mean, they're living very peaceful life. So whenever we, I mean, address them about an issue, they are always ready to participate. So I don't foresee any kind of much of a challenge to work with these kind of people. These people are very helpful. And in fact, what we have realized over a period of 7 years is they become the lifeline to our technology. Okay. Thank you so much, Vikalji. Thank you. Thank you. Thank you so much. And now we will move on to the session with the next speaker, who's Ms. Bharti Goyal Man. And Bharti ji has been working with the community, with the tourism sector very actively. As such, Bharti ji is the Vice President of the SAP service line APAC, and she has a track record of more than 20 years in customer service and customer success. But she is a very keen on tourism, as a mentor on NASCOM Deep Tech Club, Luminous Supply Chain Club, and FICCI Travel SMB as well. And she has been working with startups, and she has been working in tourism as an avid traveler, and enlightening the travelers onto the real-time scenarios into the travel and tourism sector. And she is working with FICCI also on this, and she is also very focused on the socio-economic upliftment of the local communities in offbeat destinations, like working with the communities with women participation, and then also working with the to make the different changes that she can do right now, like for that for the growth of the small offbeat destinations. So now I would like to invite Bharti ji to come and take over. Bharti ji, please, you can begin. थैंक यू कीर्ति जी. मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ CEPR के इस प्लेटफॉर्म पे आना और अपने टूरिज्म एक्सपीरियंस के बारे में बात करना. मेरी आवाज क्लियर है कीर्ति जी? थैंक यू. टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे पहला एक्सपीरियंस बाकी सभी लोगों की तरह है, मेरा भी वही है कि आप रोड ट्रिप पे स्टार्ट करो. You start on the road trip, you go to different places, you meet the different people, and then slowly as I started unpeeling the tourism, मुझे एक बात समझ में आई कि जो गांधी जी ने कही थी कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है. आज भी टूरिज्म इंडिया में इसके गांव में ही बसता है. जब भी हम बोलते हैं एक ऑफ बीट प्लेस, एडवेंचर डेस्टिनेशन, एडवेंचर, बद्रीनाथ की बात करते हैं, हम केदारनाथ की बात करते हैं, गंगोत्री धाम की बात करते हैं, या फिर हम किसी भी कांगड़ा देवी की बात करते हैं, ये सब एक छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे विलेज हैं इनके आसपास, जहां पे आज भी टूरिज्म पनप रहा है. और यहाँ पे लोग कम्युनिटी की वजह से ये सारा रिलीजियस टूरिज्म का सर्कल बन रहा है. मेरा जो एफर्ट है इन सारे एरियाज में सांगनिका जी की तरह, आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट. हम लोग मेन सप्लाई चेन पे काम करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की. वी वर्क ऑन द सप्लाई चेन ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, मेकिंग श्योर कि एक धार्मिक संस्थान जैसे स्वर्ण मंदिर हुआ, या फिर जो बड़े बड़े धार्मिक संस्थान है, या फिर जैसे आपका तिरुपति है, वहां पे बहुत चढ़ावा आता है. उस चढ़ावे की अपनी एक सप्लाई चेन है, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको अलग अलग सॉर्टिंग करनी पड़ती है, उसका पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाना पड़ता है. इसी तरह से वहां पे भक्तों के लिए प्रसाद है, भक्तों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं. वैष्णो देवी में आपका एक पूरा भक्तों के ठहरने के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं. देयर इज lot of things that keep coming in those areas. So you need technology to support you. You need supply chain software, you need customer responsible software, which is where a lot of tourism institutes and tourism places in India are investing, and we are working with them to make sure that they can automate the whole system, ताकि tourism एक धार्मिक संस्थान पूरे सुचारू रूप से चल सके, बहुत अच्छे तरीके से चल सके. That is what we are trying. इंडिया में देर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म इन ऑफ बीट प्लेसेस. खासतौर पे रिलीजियस प्लेसेस में मैंने ये देखा है कि देर इज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, जो अयोध्या से शुरू हुआ है हमारा. वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज अराउंड केदारनाथ, बद्रीनाथ, अराउंड एनी ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स. एडवेंचर ट्रेवल में और रिलीजियस टूरिज्म को कंबाइन करना, दैट इज अ बिग स्कोप. We have large number of tracks in India which are religious in nature. For example, Kailash Mansarovar trekking.
Mahadev trekking, Bijli Mahadev trek and all. So wherever we go, whether we go to Manali, whether we go to Rishikesh, or whether we go to Gangotri, Yamunotri, these places are not just for religious travel. These places are for the adventure travel lovers also. They can do trekking over there. They can do mountain hiking over there. They can do a lot of paragliding activities and other stuff over there. हर धार्मिक संस्थान की एक हिस्ट्री है. हमारे देश में हर धार्मिक संस्थान की एक कहानी है. हर there is a story behind it. So there are a lot of entrepreneurs who are trying to bring the stories. For example, तिरुपति की एक story है कि why do you donate gold in Tirupati temple and you don't donate gold in any other place in the world? But Tirupati temple में you donate the gold. So what is the story? Why Tirupati ji accepts gold? Similarly, there is a story of entire Ayodhya एंड भगवान राम की एक पूरा का पूरा सर्किट है जो हिमाचल में झिब्बी बंजार से शुरू होके जहाँ पे श्रृंगा ऋषि देव जी का मंदिर है, which is where you know the first yagya was performed by Maharaj Dashrath to get his 4 sons, to which is going all the way to Madhubani district in Bihar, जहाँ से सीता जी जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, जहाँ पे उनका विवाह हुआ था, and then in between you have Ayodhya जहाँ पे जहाँ की वो रानी थी. So in India, young generation is very much focused on knowing the whole story. It is very much focused on knowing the whole chain of the events that are correlated to our history. रामायण उनके लिए एक अलग experience है, and when they visit these tourist places related to our history, they start believing in these places better way. And that is what many young entrepreneurs who are associated with us in NESCOM and other places, they are trying to do. And I believe there is a requirement for the government to support these entrepreneurs and to bring them in the limelight, to bring them at the forefront. The religious institutes in India, they are very empowered institutes. They have a lot of charitable activities where they are working. You know, all the temples, all the religious institutes which get large amounts of money as donation, they are involved in charitable activities. They open homes for homeless, they open homes for elderly, they open educational institutes, they do religious study institutes, and then there is a huge ecosystem of these religious institutes which needs to be taken care. And technology will be a big enabler of these things. And these entrepreneurs who are working here and there, they will be able to make this ecosystem much more alive. You know, for example, we can see that Gabbage is very focused on ensuring security. Devsthan is very focused on ensuring an experience to the customer. You know, similarly, there are other people who are actively involved in other value chains of the religious institutes. And that is what we need to capitalize on from the entrepreneurial industry. Okay, well, thank you so much, Bharti for your session. And it's really interesting to see that how technology and the religious tourism is intermixing with each other and how both are enabling each other. Basically, for technology, this is a new niche wherein the technology can perform, and for religious tourism and tourism as a whole, technology is a tool wherein through which we can really revive and survive, as in the inaugural session our chief guest sir had said. We can really revive the tourism sector through technology. So thank you so much for being with us. And now I will move on to our next panelist speaker, Shri Sunil Kumar Sharma ji. He is the former cabinet minister power from government Jammu and Kashmir, and he was elected the MLA Kishtwar, and he has been in the cabinet minister. Now he is rendering his services in Kishtwar as a general secretary, BJP JNK as well. And being from the state of Jammu and Kashmir, which is such a scenic state and such a tourist friendly state, in the past, like we had only one state which was popular for tourism, that was Jammu and Kashmir. So he is very active in promoting tourism over there. He is involved in the ground level work in reviving tourism in the valley and making it safe for the tourists. And he is also very keen on working to strengthen the tourism so that it will generate livelihood and employment opportunities for the locals. And he believes that religious tourism is such a big channel for socio-economic upliftment of the people and the local communities in Jammu and Kashmir.
So over to you, Sunil ji. Welcome to the our event, and welcome to move ahead and take this session forward. धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आप समरी देनी है ना, तो उनको कौन देगा समरी? भारती जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? कैन यू हियर मी? यस सर, प्लीज कैरी ऑन। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म जो बना है आज टूरिज्म को लेकर, और विशेषकर जो खासकर पिलग्रिमेज टूरिज्म को लेके है। तो जम्मू कश्मीर जो आपने अभी जिक्र किया, जम्मू कश्मीर का एक विशेष स्थान है टूरिज्म को लेके, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप ऑफ रिलीजियस टूरिज्म एज वेल एज एडवेंचरस टूरिज्म, इसमें कोई शक नहीं है। मैं केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर जितने भी यहाँ पे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन रिलीजियस प्लेसेस का भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और मुझे लगता है कि इसकी इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे देख पा रहे हैं? कोई डिफिकल्टी? Can you hear me? Hello. Hello. Yes, yes, sir. तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि भारत की इंटीग्रेशन में भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे रिलीजियस जो टूरिज्म है उसको लेके। आप यदि बहुत पीछे न जाते हुए केवल हमारे शंकराचार्य जी की जो यात्रा रही है, शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा एक स्थान हमारे कश्मीर में है, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है भारत की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, भारत की इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा रिलीजियस प्लेस है जिसे हम वैष्णो देवी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल लेवल का एक हमारा स्थान है जहाँ पे करोड़ों भक्त लोग वहां पे आते हैं। उसको भी मुझे लगता है कि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा मैं आपको ऐसे कई स्थान बता सकता हूँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस वक्त जो टूरिस्ट आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे एक शिव खोड़ी के नाम से बहुत एक शिव गुफा है। इसके अतिरिक्त एक सुध महादेव मानतलाई जहाँ पे इंटरनेशनल योगा सेंटर भी अभी बनने जा रहा है। इसके जहाँ पे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल योगा सेंटर बनने के बाद जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी घोषणा की है, पूरे देश नहीं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एक योगा का केंद्र बन सकता है। यहाँ पर एक मचेल माता के नाम से एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे हर साल लगभग लाखों लोग वहां पे जाते हैं। जब इस ट्रैक पे हम चलते हैं, इसमें हिली टॉप टीरन जंगल सारी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें रिलीजियस दर्शन के साथ साथ हमारा एडवेंचरस टूरिज्म भी, हमारा एडवेंचरस ट्रेवल भी इसके साथ साथ चलता है। मैं एक बात का यहाँ पे बहुत ही जरूर जिक्र करना चाहूंगा। हमारे जम्मू कश्मीर के एक किश्तवाड़ जिला के एक आखिरी कोने में एक ऐसा स्थान है जो हुद माता के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पे एक बहुत ही विचित्र घटना घटती है। वहां पे दिन में एक पानी का एक नाला बहता है और दिन में 3 बार इसमें पानी आता है, ऊपर से लेके नीचे तक पानी आता है। ऐसी मान्यता है इस स्थान की कि ये माता जो है इसी के कारण ये पानी बहता है और वहां पे अपने आप को उस जो पानी वहां पे बहता है इसमें नहाने से पुण्य कमाता है आदमी। लेकिन इसमें जो मैंने विचित्र बात कही, जब ये पानी बहता है कुछ समय बाद ये पानी सूख जाता है और ये बिल्कुल स्टीप कोई 70 डिग्री के एंगल में नीचे पानी आता है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ सूखता है। मुझे लगता है कि ऐसा विचित्र स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। एक बार हमने केवल एक वीडियो इसका शेयर किया था, पूरे नेशनल नहीं ग्लोबल लेवल पे लोगों ने इसके बारे में पूछा। मेरा सिर्फ ये कहना था, जैसे अभी मेरे प्रीवियस जो स्पीकर थे उन्होंने भी कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकी इंफॉर्मेशन ग्लोबली अगर हम इनको शेयर करते हैं तो ऐसे
रिलीजियस टूरिज्म को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे कई स्थान मैं आपको बता सकता हूं। और वैसे भी जम्मू कश्मीर, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म को हम कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ के कम्युनल हार्मोनी में भी, क्योंकि कश्मीर में भी ऐसे स्थान हैं, जैसे बहुत बड़ा जामिया मस्जिद का स्थान है, इसके साथ साथ वहां पे दस्तगीर साहब की दरगाह है, ज़ियारत से जिनको ट्रेडिशनल सूफीज़म जो इस्लाम की बेस मानी जाती है, उसको रिलेट करके हम वापस उस संस्कृति पे आ सकते हैं जो भाईचारे की संस्कृति थी, जो भारत की संस्कृति को स्थापित करने का एक कंसेप्ट था। दोबारा वापस इसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कई ऐसे, जम्मू में कई ऐसे स्थान है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सुकराला माता का एक बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पे लाखों अभी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जम्मू में ही यहाँ पे एक सूर्य पुत्री जो तवी के नाम से बहती है, इस सूर्य पुत्री तवी को भी देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। एक खीर भवानी मंदिर जो हमारे गांधरबल, कश्मीर के गांधरबल जिला में आता है, खीर भवानी का एक बहुत महत्व है। कश्मीरी पंडितों की आस्था भी है, लेकिन पूरे देश में जो लोग हैं उनकी भी आस्था और श्रद्धा इसके साथ जुड़ी है। मेरा ये मानना है कि अभी जम्मू कश्मीर का जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो रिलेट करता है एडवेंचरस टूरिज्म के साथ, यदि हम इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ग्लोबली शेयर करते हैं, नेशनल लेवल पे शेयर करते हैं, और थोड़ा सा अभी इसमें हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि जो ट्रैवल, इसके साथ साथ जो ट्रैवल कंफर्ट मिलना चाहिए टूरिस्ट को, उसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। हालांकि केंद्रीय सरकार ने बहुत कोशिश की हुई है यहाँ पे ऐसे स्थानों को डेवलप करने के लिए, ऐसे रोड सेक्टर में, ट्रैवल के सेक्टर में लोगों को सुविधा देने के लिए, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि कमी है। एक रिलीजियस स्थान यहाँ पे कैलाश कुंड है, भगवान शिव के नाम पे एक कुंड माना गया है, कैलाश कुंड, जो एक भद्रवा, जिसे मिनी कश्मीर के नाम से डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक पार्ट है, वहां पे माना जाता है। कैलाश कुंड एक ऐसी पहाड़ी पे है, जब हम वहां के लिए चलते हैं तो वहां पे भी लोगों को एक अट्रैक्शन मिलती है, पहाड़ों की अट्रैक्शन मिलती है, जंगल की अट्रैक्शन मिलती है। और इसके साथ साथ जो हेल्थ टूरिज्म की हम जहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे हमें पहाड़ों में मेडिसिन मिलती है, हेल्थ टूरिज्म के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। हमारे इधर कश्मीर में एक शारिका टेम्पल है, हरि पर्वत के नाम से, मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे लोग कश्मीर जाते होंगे और हरि पर्वत का नाम सुना होगा। हरि पर्वत में वहां पे शारिका देवी का एक टेम्पल है जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको भी हम एक सर्किट में जोड़ के आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का एक अट्रैक्टिव स्पॉट हो सकता है। हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल जम्मू के पास में लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा काशी के नाम से परमंडल एक स्थान है जो डेवलप अभी हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम कृतज्ञ हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के, जिन्होंने खुद वहां स्वयं वहां पे जाके परमंडल को डेवलप करने के लिए एक बीड़ा उठाया। और आने वाले दिनों में परमंडल, जो छोटा काशी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, वहां पे लोगों की भीड़ दिखेगी। और मुझे लगता है कि ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही एक अच्छा स्थान हो सकता है। बाकी जो अभी तक मैंने जिक्र किया, लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया, अभी भूला नहीं, मैं चाह रहा था कि इसको अंत में बोलूं। जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में चलती है, पिछले समय कोरोना लॉकडाउन की वजह से उसमें कमी आई है, लेकिन अमरनाथ अपने आप में एक विचित्र धाम है, जहाँ पे नेशनली इंटरनेशनली इसकी एक मान्यता है। हर वर्ष लाखों के हिसाब से लोग वहां पे आते हैं। अभी काफी जगह पे उसकी मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन की कमी और थोड़ी जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज हैं, उसमें भी सुधार अभी हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अमरनाथ जो है, अमरनाथ अपने आप में एक ग्लोबल एक स्थान पाएगा। और इसके ट्रैकिंग जो रूट्स हैं, इसमें भी एडवेंचरस और हेल्थ टूरिज्म को हम रिलेट कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अलग अलग रूट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैकर्स के लिए, जो फॉरेन ट्रैकर्स के लिए जो ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं, मैं जरूर इनका जिक्र यहाँ पे करूंगा, क्योंकि ये अमरनाथ जी के साथ रिलेट करते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी फॉरेन टूरिस्ट ये ट्रैकर्स आते थे, जो ट्रैकर्स का एक बेस कैंप मुझे लगता है कि गोवा में है, उनके पास पूरा मैप बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर को एक स्थान से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी वो ट्रैकर्स एक स्थान, डिस्टिंक्ट टू रीजन्स हैं और अंदर भी इनके रीजन्स हैं, उनके बीच में जाके ये ट्रैकर्स
अपना ट्रैक रूट वो चलते थे इस पे, ऐसे 15 पीक्स भी बीच में आते हैं, 15 पीक्स जो ये क्रॉस करते थे या जो उनको टच करते थे। ये ट्रैकिंग रूट दोबारा से चलने के लिए मुझे लगता है शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, और जो प्लेटफॉर्म आज मिला है इसके जरिए भी हम इस ट्रैकिंग रूट का हवाला दे सकते हैं, जैसे बुक, किश्तवाड़, हंजल, इंशन, बुदखोल, लासुरू, करगिल। ये जम्मू के एक कोने से शुरू होता है किश्तवाड़ से, और कश्मीर से होते हुए ये कारगिल, लद्दाख के एक एंड तक जाता है, और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रूट हो सकता है। एक हमारा किश्तवाड़ पाडर चिसोटी उमासिल्ला पास, जो एक रिकग्नाइज पास है, इससे गुजर के पदम और जांस्कार, ये भी करगिल का एक पार्ट आता है, आखिरी कोना आता है, वहां तक के ट्रैकर्स के लिए ये रूट बने हुए हैं। और बासमती 90s में मिलिटेंसी आए, और मिलिटेंसी से ये धीरे धीरे कम हुआ और आजकल बिल्कुल ही लुप्त हुआ है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज मिला है। मैंने बहुत ही कम समय, आपका चूंकि यहाँ पे है, इस कम समय में थोड़ा सा मैंने अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं और ट्रैकिंग रूट्स हैं, और कैसे इसको एडवेंचरस टूरिज्म के साथ, हेल्थ टूरिज्म के साथ रिलीजियस टूरिज्म को जोड़ के कोरिलेट करके एक सर्किट बनाया जाए, ये मैंने यहाँ पे ये विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरा टाइम इतना ही था, मैं आपका ज्यादा वो टाइम न लेते हुए अपने विषय को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हालांकि मैं आपका 1 मिनट और लूंगी, क्योंकि आपने इतना ग्लोरियस जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म का हिस्ट्री है, और सिर्फ रिलीजियस नहीं है, एडवेंचर और वेलनेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो आपने बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हैं, यंग एंटरप्रेनर्स हैं सेशन में, आपने देखा सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने जो सर्किट्स के नाम बताए, ट्रैक्स के नाम बताए, वो सब बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। तो 1-2 लाइन आप एंटरप्रेनर्स के लिए बताइए कि वो किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में आकर काम कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एंटरप्रेनर्स के लिए एक मैसेज दें। मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। सॉरी, एंटरप्रेनर्स के लिए एक आप मैसेज बोल रहे आप थे दे 2 दें। लाइन में क्या जी सर, मैं आपसे सिर्फ यही चाह रही हूँ कि जितने भी यंग यहाँ पे एंटरप्रेनर्स हैं जो टूरिज्म को बढ़ा रहे चलिए, मैं हैं। आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कहूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज। जी सर, प्लीज कहिए 2 लाइन में एक मैसेज एंटरप्रेनर्स, बिजनेसमैन के लिए, जो एंटरप्रेनर्स यहाँ पर आप हैं, सुन पा रहे हैं जो। मुझे? जी सर, बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, am I audible to everyone? Am I audible to everyone? So now I will, this was a very informative session, and I really thank all the panelists for joining us here on religious tourism, ecotourism, and all the other new trends in tourism. And I would like to now move ahead, and I would like to thank all the panelists here, and I would like to move ahead further. From this side, this session is closed now, and now we will move to the valedictory session, and I will now invite Shri Brajesh Jaswal ji. He is Senior Advocate, Punjab and Haryana High Court, to address the event both physically and virtually. Prakash, over to Brajesh Jaswal ji. Shri Prahlad ji, and other scholars also. I heard the views of so many
scholars on the issues of to develop tourism. Now, after the pandemic, after March, so many things changed, and हाँ जी तुम ये a new has emerged, which we हाँ heard लग गया in. सुभाष Am जी I प्लीज audible? अनम्यूट सुभाष जी प्लीज म्यूट पिक कर लें. Am I audible is a word which give us a lot of lesson, as we know whether we have to ask ourselves whether we are audible to the world or not. Our tourism is an important sector, and we believe that India has a lot of potential in the tourism, and we have in a coming years also, because in an Asian country, India, China, these are the two nations, serious nations, which are looked by the world for the tourism and for the rich cultural heritage. So many issues were discussed today regarding the infrastructure, proper management of resources, transportation, lodging facilities, amusement parks, laser light shows, ATMs, helpers, local agents, guide, adventure, sports, marketplaces, information system, mobile connectivity, advertisement, involvement of private sector in building infrastructure, proper arrangement of security, health tourism, and meditation, yoga. So many things have been discussed today. And it is a time that we have to build all those the gaps, and so that we can develop India a good marketplace. I'm a traveler, and in my field, we are being from the legal profession. So many travel advocates, they travel all around the world and India also. And first thing which comes to mind is whether at the time of we look at the budget, whether and this budget, this place is good for me or not. So these are the things where a cap has to be created, a system has to be created, and a lot of things has to be developed. So a traveler, on the because I have heard the views of so many investors and CEOs, and as a traveler, I am giving my option. First, I say whether first thing I want, whether wherever I am going, the things are there safe for my family. This is my first consideration. And whether the infrastructure, if I'm going with my child, whether there are facilities or there any play area, any amusement park is there. And these things are available in various parts of the world, but sometimes these are missing in our country. Whether it relates to any religious play, we go to the Amritsar to visit, pay a visit to the Golden Temple. But there are not so much the amusement parks or other places where our child can develop an interest. So these are the things which require a deep consideration, and the views which are shared by you. I'm really thankful. I'm highlighting that larger section of the corporate sector and the government sector. They are considering this, taking this sector is very seriously, and trying to develop this sector as a big hub for India, where the job opportunities can be created and economy can be developed. And after pandemic, we are the nation. We proved the world that we are the nation which recovered from the last 8 and 9 months in a very fast manner, and we are moving forward. And I think I must congratulate Subhaji and the Ashwin Johar and team of the event, who are organizing this event and connected so many eminent jurists in this field. And definitely, after this, some groundwork will come into the picture, which will help in developing the tourism for next year. I recently visited the Jammu and Kashmir, and I visited there, went there around 15-16 times. I usually go for the yatra of Mata Vaishno Devi, and thereafter I go to Srinagar and to Leh Ladakh with my family. And earlier I used to go with my friends. And I'm seeing there's a lot of development happening there. And the distance they cover, the road development infrastructure is developing very fast. It will help in. I heard a word from my one of the speaker who spoke just before me. He's informing all of us that there are so many religious places in the Jammu and Kashmir, which are actually a very good places for tourists to visit.
But the saddest part is the infrastructure problem is there. I am visiting there from since 1996 to 2018. Every year I used to go there. And development is happening, and recently last 3 years the development is happening very fast because the roads are developing fast, and I think the tourism will boost there also. So I will not take much time, but I must request all the private sector players and the government sector to develop the infrastructure so that the more we can attract more foreign tourists, and which will help in boosting our economy, and which will help our local the players also. So with this word, I just rest my voice. Thank you. Thank you so much, Brijesh ji. Your words are really encouraging, and we look forward to your suggestions which you have shared with us. And now I will request Subhash ji to take over and present his views. Subhash ji, Director CEPR, he is the coordinator for this event. Actually, उनके सारे मेहनत से ये सारी इवेंट आज पॉसिबल हो पाई है, और उनके डायरेक्शन में, उनकी गाइडलाइंस में हमने जो काम किया है, और उसके बेसिस पे हमारे सारे पैनलिस्ट और सबका मैं धन्यवाद भी देती हूँ। और मैं सुभाष जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके इतनी मेहनत की वजह से और इतनी मैं ये कहना चाहूँगी बहुत जिद से काम किया उन्होंने, उसकी वजह से आज का ये इवेंट इतना सक्सेसफुली हम कर पाए हैं। तो सुभाष जी, ओवर टू यू। आपके व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। थैंक यू कीर्ति जी, धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। मैं तो घर पे आराम कर रहा हूँ। जिस प्रकार से भारती जी ने, आपने, तृप्ति जी ने और सब लोगों ने मेहनत की है, आज सुबह से अपना ये इवेंट चल रहा है। आदरणीय मंत्री जी को हमने सुबह सुना, उन्होंने सरकार किस दिशा में सोच रही है, किस तरह से प्रयास कर रही है, और टूरिज्म एक तरह से आप कहें तो मोदी जी का बहुत प्रिय विषय है। जब भी मंत्री जी से, प्रहलाद पटेल जी से भी मिलना होता है या बाकी लोगों से मिलना होता है, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री देश को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं। तो हमने सुबह विजन सुना, और उसके बाद के दोनों सेशंस में भी हमारे जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट थे, उन्होंने अपने अपना विषय हमारे सामने रखा है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने पॉलिसी इश्यूज की बात भी उठाई है, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भी आज आई हैं। कारपोरेट सेक्टर के लिए क्या करने वाले काम है, किस तरह की नई अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह का पोटेंशियल है, ये सारी डिस्कशन आज पिछले 3 घंटे में हमारे 12 जो पैनलिस्ट थे उन्होंने की है। वो सारी डिस्कशन हमने रिकॉर्ड भी की है, और इस पूरी डिस्कशन के बिहाफ पे, और कुछ हमारे जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट नहीं आ सके हैं, उन्होंने रिटर्न में भी हमको अपनी व्यू पॉइंट भेजे हैं। तो इन सबको मिलाकर के हम एक रिपोर्ट और कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं आज की इस टूरिज्म कॉन्क्लेव की, वो हम सरकार को देने वाले हैं। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का फोन भी आया था उनके वक्तव्य के बाद कि हमें आप जितनी जल्दी ये रिकमेंडेशंस देंगे उतना ही सरकार के लिए अच्छा होगा। तो कोशिश करेंगे कि हमारी टीम मिलकर के इसको जल्दी से रिपोर्ट के रूप में समराइज करे, और वो सारी रिपोर्ट जो है हम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजें, ताकि टूरिज्म सेक्टर को जिस प्रकार की एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, पॉलिसी इंटरवेंशंस की जो जरूरत है, जिसके बारे में पूरी डिस्कशन अभी हुई है, उसके बारे में सरकार जल्दी से तेज त्वरित कदम उठा सके। तो इतना ही मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। और एक बार सबका बहुत धन्यवाद भी है, जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े, जो हमारे डेलीगेट्स देश भर से हमारे साथ जुड़े, चंडीगढ़ में जो फिजिकली भी जुड़े, जो वर्चुअली भी देश भर से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। अभी हम प्रिय सुनील जी को सुन रहे थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो ऐसे सब लोगों का बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी ये जो पूरी रिपोर्ट है ये पब्लिश भी होगी, और ये सब लोगों के पास हम ईमेल के थ्रू भी और कोशिश करेंगे कि उसकी एक हार्ड कॉपी भी आप सब लोगों को उपलब्ध हो, ताकि आज की हमारी ये जो कॉन्क्लेव है ये सिर्फ एक डिस्कशन ना रह जाए, ये पॉलिसीज में कन्वर्ट हो। इसके जो निष्कर्ष निकला है सरकार की पॉलिसी पर, उसका कुछ प्रभाव हो, ताकि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो और तेजी से आगे बढ़े, देश में रोजगार को भी बढ़ाए, देश की आर्थिक प्रगति को भी बनाए। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपके वर्ड्स के लिए एंड योर वर्ड्स आर वेरी इनकरेजिंग एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू द रिपोर्ट एंड द रिकॉर्डिंग एज वेल इफ इट इज पॉसिबल so that we can share it with all the panelists and all the participants. आज की मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास we were reaching approximately more than 1,000 participants, approximately 1,000 participants online. We were reaching at that time. उसकी वजह से बीच में हमारा सिस्टम भी क्रैश हुआ था अगर आपने देखा हो तो now moving towards the end of the session, I would like to invite Professor Prashant Gautamji. He is Senior Professor at University Institute of Hotel and Tourism Management, Punjab University, Chandigarh. So since he is he a mentor for the tourism industry, he is a professor at the university and grooming the future students, future entrepreneurs and future task force for the tourism industry. His views will be very important. So over to you, Prashant Gautamji, please. You are welcome. Thank you, madam. Respected Subhashji and all the participants, since morning we are having really a great food for our thought. We know that this year, or like for the last 1 year, we are passing through a very difficult phase. And this phase was really demolished the world's tourism and travel sector. Till now, there are like, if we divide tourism into, then we can divide tourism in 3 parts. One is domestic, one is inbound, and other one is outbound. And believe me, inbound is 0 as of now, almost 0. Outbound just started, and it is the domestic which acted as a savior for this industry. Only 2 things I would like to, because many people they talked about some fantastic things. Really, I'm telling everybody that it was really a great food for thought. 2 things I would like to share from this platform, and I will request the host to please submit this thing to the request to the Government of India. Recently, in the month of October, the Government of India, they has incorporated one TCS on foreign money, for the collection, the sending money from India to somewhere outside country. Believe me, in India, we have a good number of the people who are working in the field of the outbound tourism. Whenever we are operating any tour, we have to send some money. And all those operators, because there is still now, there is no voice on it, because the outbound is totally stopped for as of now. So people, they don't know that this is going to hamper their business. 7 lakh, till 7 lakh, the government has allowed that, okay, it's free. But if a couple is going for a holiday, it is definitely going to be the more than 7 lakh. So please, my request is, please treat tourism as the child which was deprived of every facility for like 1 year. For 1 year, people, they are seriously in trouble. This sector has given employment to a huge number of people, and all the life of all those people, all the families of the people who were working in this industry, they need serious thought, serious help from the government sector also. But how government can help them? Because one thing where I could able to find some solace, I can say, it is tourism has been considered as an MSME. But how many of we know that this sector is into the MSME? How the greatest, I'll say, the package announced by the Modi government, 20 lakh crore rupees was given to MSME sector. How many from the tourism sector they could able to take the benefit of it? Isn't it the duty of the institutions which are working in the field of the tourism to give knowledge, to give the training, to give all utmost facility or help to the people who are working in the tourism field to take the benefit of this situation?
This is an abnormal time, and it needs abnormal ideas to come out of it. One of the greatest ideas I could able to mention here, it was given by the Honorable Chief Minister of Himachal, Mr. Jairam Thakur. He has really given one idea of the tourism in quarantine. People, the journalists, they laughed at this idea. They said that what the hell is quarantine, tourism in quarantine? And I'll give two facts. Even Himachal Tourism Development Corporation, they opened 24 of their hotel out of 60 hotels as quarantine center. And believe me, at least 50% of the salary they could be able to generate. One of my student, he operated his camping site. He was having a camping site. He was a very small entrepreneur in this field. His whole family lives on the bread and butter earned from the tourism, and he operated his campsite as a quarantine center. And he said that till today you can find some of his videos on Facebook also. He really thanked the Chief Minister of Himachal that he come out with certain very good ideas. So this is an abnormal time. This needs some abnormal ideas, and today definitely I could able to get some fantastic data regarding the future course of this industry, and I'm thankful to everybody. And first of all, on behalf of the CPR, on behalf of the host, I would like to thank our respected chief guest, Prahlad Patel ji, who has shared his time, who shared his views, and who shared that what government is doing for the betterment of this tourism and hospitality industry in India. I'm thankful to Ashish ji, who really talked about one thing, which is like tourism is a typical Swadeshi movement. If you are helping tourism, you are helping the Swadeshi movement. And thank you for your word of wisdom and your deliberation. Your talk was really awesome. I'm thankful to Sanjay Tandon and that he has shared his views with us. I'm thankful to all the panelists and our fantastic moderators, Ashish ji, Bharti ji, Tripti ji, Kirti ji, and we had a very good number of panelists and who really contributed for the success of this conclave. Once again, I'm thankful to Subhash ji and Jawhar ji and my friend who is sitting just next to me, Brajesh ji. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Thank you so much, Prashant ji. Your words are really encouraging. And I would also like to thank our chief guest, Shri Prahlad Patel ji, for his views on tourism and how the government is going to take it forward, and with the helping the entrepreneurs and helping the entire tourism industry on the whole. And now, and I would also like to thank Satish ji for taking up this cause, I mean, with all his heart and making it very meaningful for us, and also so that the domestic tourism can also be boosted in many ways through all these platforms, so that we can make our voice heard to the government, so that the tourism industry will benefit as a whole in different dimensions. And also I would like to thank the industry leaders who have joined us for both the panels, like Santosh ji joined, Dharamveer ji joined, then Prashant ji joined, Rashmi ji, Aditi Balbir ji, and others as well. I mean, since they belong to the industry, their words of wisdom mean a lot, and their knowledge will definitely benefit the industry in many ways and help the government work on the policies as well. And I would like to thank the moderators, and especially Tripti ji, and for her moderation of the second session. And I would like to thank Ashish ji, co-chairman FICCI Travel Technologies Committee, who has taken this initiative very actively and who has really worked hard on formalizing and working on this event with us. So thank you so much, Ashish ji.
And I would also like to thank Subhashji for giving us this opportunity to make this event a successful event. And in the end, I would like to close this session by saying thanks to all the participants who have participated and attended from every corner of India, from every part, from a remote village also, and from Andaman Nicobar also, from Andaman Nicobar also, the esteemed panelists also joined with us, and from J&K also. So basically this has been a representation of entire India, from north to south and from east to west. So thank you so much for such a wonderful event. I would like now close this event. So thank you all for coming and joining us. Thank you so much.